Hey guys, this is Dr. Aman Setia, your medicine faculty at LN Next. So today we'll discuss like recall questions of FMG exam. So again, there are some partial questions, so I'll need your participation. So let's get started. Starting with question number 1. Patient complains of difficulty breathing, fatigue on examination, distended neck vein and muffled heart sound. Even like some students are saying, कुछ बच्चे बता रहे कि JVP finding mention थी, that was absent. Why? यही था क्वेश्चन. सो अगेन दिस इज सबका क्वेश्चन सही हुआ ये वाला. तो क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? ऑप्शंस पे मत जाओ. सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑन कार्डियक टेम्पोनेट. तो कुछ एक रिकॉल सेशन जो मैं करूंगा दैट विल बी आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, जो जिसमें आपके पूरे एग्जैक्ट ऑप्शंस होंगे. तो दिस इज लाइक मिलता जुलता एक क्वेश्चन, जो जितना क्वेश्चन बच्चों ने दिए है उसके हिसाब से बना हुआ है. तो ये क्वेश्चन एक सही हो गया. देखो मेडिसिन के क्वेश्चन पेपर में आए थे, लेकिन तुम्हारे सब सही हुए, डोंट वरी. ओके, सो देखो दिस इज एब्सेंट वाई और यू कैन से प्रोमिनेंट टैक्स. मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था पे टैक्स. सो पे टैक्स से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया. डन. आगे चले. कार्डियक टेम्पोनेट. ओके, इट वाज जेवीपी प्रेजेंट. ओके, जेवीपी प्रेजेंट. जेवीपी में क्या था? एब्सेंट वाई डिसेंट था आई थिंक. सही हो गया ना? तो बारह क्वेश्चन आगे चलते. चलो. ओके, देन देयर वाज अ क्वेश्चन कि पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन है. टिंगलिंग सेंसेशन है, सीरम फेरेटिन डिक्रीज्ड, TIBC increase. So again when you see this type of question, tingling से confuse नहीं होना. when they are giving you absent y answer में था. okay, absent y wasn't the answer, so absent y is the answer. so diagnosis cardiac tamponade and answer is absent y. this was the answer. clear? okay, आगे चलते हैं. so एक क्वेश्चन करेक्ट हो गया. मूविंग टू नेक्स्ट वन. सीरम फेरेटिन इज लेस, TIBC इंक्रीज. TIBC इंक्रीज, तो क्या डायग्नोस होगा? इट्स अ केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. सो कुछ क्लिनिकल केस था, राइट. कुछ स्मॉल साइन नहीं पूछा था. आई थिंक दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन ऑन पल्सेस पैराडॉक्सेस, सो आई विल कम टू दैट, राइट. उस पर भी आएंगे अभी. सो एक क्वेश्चन मिलता जुलता था, अ क्लिनिकल केस वेयर सीरम फेरेटिन वाज द हिंट, सीरम फेरेटिन इज डिक्रीज, TIBC इज इंक्रीज्ड. सिर्फ टिंगलिंग देखकर आपको आंसर नहीं मार्क करना है, जस्ट बाय सीइंग द टिंगलिंग, राइट. तो अंडरस्टैंड दिस थिंग. सीरम फेरेटिन वाज मेंशन, इट मींस इट्स अ केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. फिर B12 नहीं देखना, B12 ऑप्शन में था कि नहीं था. फेरेटिन जब दिया हुआ, इट मींस दे आर थिंकिंग, दे आर आस्किंग अबाउट आयरन डेफिशिएंसी. ओके, देन देयर वाज अ केस वेयर दे हैव मेंशन लाइक पेशेंट इज हैविंग फ्लैपिंग ट्रेमर्स और एस्टेरिक्सिस. सिड्रोब्लास्टिक था तो नहीं होगा. हाँ आदर्श, ये जो क्वेश्चन है 15 mmHg, ये मैंने आगे डाला हुआ है, ये आएगा. ओके आदर्श, दिस क्वेश्चन विल कम, ये आएगा अभी. सिड्रोब्लास्टिक नहीं होगा आंसर. सो फेरेटिन इज डिक्रीज. सिड्रोब्लास्टिक में फेरेटिन बढ़ा हुआ मिलेगा, दैट इज एन आयरन ओवरलोडेड स्टेट. क्लियर? ओके, जो 15 mmHg वाला क्वेश्चन था उसमें ऑल एक्सेप्ट आया था, तो क्वेश्चन वाज ऑल एक्सेप्ट, दैट विल डिस्कस. उसका आंसर HOCM है, वो अभी आगे बताऊंगा मैं, राइट. सो टिंगलिंग सेंसेशन विद हाई TIBC, दिस वाज द क्वेश्चन. सो आंसर इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. Moving to next one, asterixis. So basically it is due to like CO2 narcosis or hypercarbia. So ये option में था hypercarbia. So asterixis basically you can see in many whenever there is hypercarbia or CO2 narcosis, or I can say metabolic encephalopathy, like hepatic encephalopathy, तब भी होएगा. Okay. So this is question number 2. Moving to third one, this is question number 3. asterixis वाले का क्या आंसर होगा? hypercarbia. फोर्थ क्वेश्चन इज MEN1 डिसीज. तो MEN1 सिंड्रोम में क्या होता है? 3P. 3P मीन्स पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड एंड पैंक्रियास. तो फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ पार्ट ऑफ MEN2A, MEN2B. रिनल सेल कार्सिनोमा, इट इज नॉट इन MEN सिंड्रोम. MEN4 में हो सकता है. पैराथायरॉइड ट्यूमर नहीं होगा, सो आंसर विल बी पैराथायरॉइड एडिनोमा, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, पैंक्रियास. फेरेटिन बढ़ा हुआ था, TIBC लो था, वही लिखा है मैंने. फेरेटिन बढ़ा था, TIBC लो है.
रेड सेल साइज भी स्मॉल था. ओके, आई एम एडिंग. थैंक यू फॉर द इनपुट. सो रेड सेल साइज was less means microcytic हो गया. अब तो आंसर क्लियर है. Now it is definitely end of anemia. Clear? Okay. Asterixis. Anybody can recall a question on asterixis? Okay. पेशेंट से हैंड मूवमेंट करवाया गया था. ऑप्शंस भी है थायरोटॉक्सिकोसिस एंड हाइपरकार्बिया हाइपोक्सिया. सो अंडरस्टैंड दैट हैंड मूवमेंट जो करवाया गया था उसको बोलते हैं फ्लैपिंग ट्रेमर. सो अंडरस्टैंड, अगर देखो मेरे को, जस्ट लुक एट मी, इफ दिस टाइप ऑफ ऐसे ट्रेमर्स अगर आ रहे हैं, हैंड मूवमेंट मींस अगर इस टाइप के ट्रेमर्स आ रहे हैं, इफ अगर ऐसी हैंड मूवमेंट कराई गई है, पीछे से हाथ को खींचा जा रहा है, देन यू कैन सी फ्लैपिंग ट्रेमर्स. दिस इज द मूवमेंट. इसको बोलते हैं एस्टेरेक्सिस. सो एस्टेरेक्सिस कहाँ मिलेगा? थायरोटॉक्सिकोसिस में अनलाइकली. थायरोटॉक्सिस यू कैन सी नॉर्मल ट्रेमर्स यू कैन गेट देयर. सो आंसर विल बी हाइपरकार्बिया. सो उसका आंसर क्या होगा? हाइपरकार्बिया. क्लियर? ओके आदर्श, मूविंग टू नेक्स्ट वन. मैन सिंड्रोम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. तो ये भी करेक्ट हो गया. सिंपल है. मैन सिंड्रोम डन. 4 सही हो गए तुम्हारे. डोंट वरी, अगर एक का गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं. मेडिसिन क्वेश्चन वेरी सिंपल. पेपर वॉज रिलेटिवली इजियर देन प्रीवियस अटेम्प्ट. ओके, others is telling same movement, so that is asterixis, a case of asterixis. Okay, then there was an X-ray based image, cannonball appearance. I think most of you have marked the answer correct. It is METS. So lung metastasis in lung, and mostly they come from breast cancer. See, ये breast से आते हैं. So cannonball. This is question number 5. Again an easy one. Okay, then there was a question on surfactant deficiency. So surfactant deficiency. So again, surfactant is produced by type 2 pneumocytes. So answer of this question should be IRDS. But since students are saying IRDS was not, IRDS means infant respiratory distress syndrome. अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो क्या होगा? ARDS. So I think ARDS was given in the option surfactant deficiency. Sideward movement of hand. Sideward movement ऐसे थोड़ी दिया होगा. It this type of movement, right? There was 2 questions. One was cannonball and there was one more question on pleural effusion, जिसमें tracheal shift दिख रही थी, right? So surfactant deficiency as such means basically IRDS is also type of ARDS, right? So दोनों में difference क्या होगा? IRDS is seen in infant. ARDS you can see in any age group, and IRDS you will see damage only on of type 2 pneumocyte. In ARDS you will see damage to both type 1 and type 2 pneumocyte. दोनों का damage होगा, right? अच्छा, वेरी गुड. ये राघव विक्रम, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन. ऑप्शन में RDS दिया था, तो अगेन दे मेड इट वेरी क्लियर. इट इज RDS मींस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. सो डिफरेंस इन दीज टू एंटाइटी विल बी, इन IRDS you will see damage to type 2 pneumocyte. In ARDS you will see damage to both type 2 as well as type 1. Both pneumocytes will be damaged. So RDS दिया था, तो क्वेश्चन इज रिलेटिवली इजियर नाउ. क्लियर? आगे चले. मजा आ गया पेपर देख के. आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट. मेडिसिन के क्वेश्चन आए थे. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सब एक्यूट कंबाइंड डिटेंशन स्पाइनल कॉर्ड. दिस वाज गिवन अभिजीत बोस. इफ इट इज गिवन इन द ऑप्शन, देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. अगर ऑप्शन में इफ इट इज गिवन सीरम B12, दैट इज द आंसर. इफ इट इज नॉट गिवन, देन MRI spine could be the answer, right? Are you in lung? You will not see the mass. Mass नहीं मिलेगा आपको because it is metastasis. Mass तब होगा when it's a primary lung tumor. Clear? Am I clear? Okay, then there is one more doubt students are asking. एक और ऊपर doubt आया था. Which option rules transudative? Okay, I am coming to this. वो लिखा हुआ है मैंने. I'll come to that question. Okay, आगे चलें. Moving to next one, refeeding syndrome. Refeeding syndrome, it is again whenever we feed a person with different types of solution, then sometimes it can lead to due to fluid shift. So again, it's an easy one. So because of refeeding, generally you will see there is loss of electrolyte. So it can cause a loss of potassium, loss of calcium, and loss of phosphate. So hypokalemia is seen, hypocalcemia is seen, hypophosphatemia is seen. Hyperkalemia is unlikely. So in refeeding syndrome, what you will not see, you will not see hyperkalemia. So answer for this question will be hyperkalemia. Clear? आदर्श मैं उस पर भी आऊंगा, right? So this is hyperkalemia straight away. Easy one, easy question.
Okay, then there was question number 8, Reiter syndrome. Straightforward question पूछा था, what is the name of HLA? So HLA with Reiter syndrome. So answer is HLA B27. HLA B27. It is in like I told you, Jaipur. Jaipur means it is juvenile rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, inflammatory bowel disease arthritis, psoriatic arthritis, undifferentiated arthritis, and reactive arthritis or Reiter syndrome. So these are the conditions which are seronegative. So rheumatoid factor is negative and HLA B27 is positive. So in all these conditions, कई कई जगह आपने पढ़ा होगा निमोनिक पेयर और जयपुर. So there are two more entities. Clear? So answer is simple. Okay, then there was a question on Duke's criteria. I hope you remember question number 9. Duke's criteria. So understand again, it was a tricky question. They have asked you how many culture you should take. So it is, remember, 3 culture, and it was clearly mentioned what type of culture. So remember, it should be 2 aerobic culture and 1 non-aerobic और anaerobic, right? तो आपको 3 कल्चर लेने हैं, 2 एरोबिक बैक्टीरिया के लिए, एक एनारोब्स के लिए. सिंपल. Cryptococcus hint in the MCQ was India Inc preparation. And second hint in the MCQ was it is HIV positive. So patient is HIV positive. So this is like a straightforward. Question number 10 is relatively easy. I hope most of you have marked this correct. सबका सही हुआ है तो. Am I clear? Faizan, Ilyas, any other और कुछ question अगर है, if you are having any other questions, you can just add in the comment box. Am I clear? आगे चलें. आयु, कृष्णा, राघव, आदर्श. Why I can't see your comment? Okay, moving to next one. So this was question number 11. A patient with hypertension. So hypertension was mentioned. ये इनके comment नहीं आ पा रहे हैं. Hypertension with hypercortisolism. Cortisol is increased, right? ACTH levels remained elevated after high dose dexamethasone. So you can know, like, it's the case of Cushing syndrome. So diagnosis is simple. Diagnosis is simple. It's a case of Cushing syndrome, right? But now they are asking you, like, a patient is having diagnosis is simple. They are asking you what is the cause of Cushing, right? Okay, some are saying it was not cannonball, but most of the students are saying कि वो cannonball nodule था. Okay, so let us see this case, Cushing syndrome. PSVT पे अभी मैं आऊँगा, वो अभी आएगा. The smoker question, chronic smoker will also come. So Cushing syndrome, now they are telling you like ACTH values are high even after giving high dose dexamethasone test. It means it is not suppressed. It means there is some ectopic source. So ectopic source, it is ectopic, means ectopic ACTH secreting tumor. What it could be a lung carcinoid. It could be, sorry, a carcinoid anywhere, or it could be small cell lung cancer. So mainly it could be due to small cell lung cancer, or it can be due to carcinoid, or it can be sometime due to CA breast. तो बेसिकली अगर आप देखोगे क्वेश्चन में हिंट क्या है, ACTH इज स्टिल एलिवेटेड, राइट. एक्सोजीनस अगर होगा तो उसमें हाई डोज में एलिवेटेड नहीं आएगा ना, राइट. So that is why answer will be ectopic ACTH. It is like ectopic ACTH tumor. Clear? So answer is A. Okay, moving to question number 12. Heel to shin test. Heel to shin test means आपको अपने पैर को heel को टिबिया को टच करते हुए लेके जाना है. That is called heel to shin test. So heel to shin test. कौन सिंड्रोम पे अभी आएंगे कृष्णा? Don't worry, कौन सिंड्रोम का क्वेश्चन अभी आएगा. Heel to shin test, where we do this in cerebellum dysfunction. So basically it's a part of cerebellar examination. So whenever a lesion is in the cerebellum, अगर कोई cerebellum में प्रॉब्लम हो रही है, then that will cause heel to shin test. Heel to shin test will be abnormal. Okay, ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन जो दिखा हुआ है, it is mentioned like steroid की वजह से, that is exogenous steroid. Okay, it was not given. So what was given? It is due to exogenous steroid. तो ये तो सेम ऑप्शन हो गया, राइट.
All of the following are causes of pulmonary edema except answer is increased plasma protein. That will come to that question. Okay, right. So अब इसको देखो, ये क्लियर हो गया. Now moving to this one, heel to shin test. ये क्वेश्चन पूछा था. So it is basically due to dysfunction of cerebellum. Means if there is a stroke or I can say hemorrhage that is involving your cerebellum. Pendular knee jerk भी इसमें होता है. You can see like there will be a drunken gait. So these are the findings. Dysdiadokinesia. So all these things we'll see there in cerebellum dysfunction. कौन सिंड्रोम, आगे आपका क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन था कृष्णा पटेल. ऑप्शंस में क्या था? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपरटेंशन वाज गिवन, palpitation was given, या लो रेनिन दिया हुआ था. ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज कौन सिंड्रोम. कौन सिंड्रोम इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मींस देयर इज मोर एल्डोस्टेरोन. So what a more aldosterone will do? It will cause sodium and water retention in exchange of potassium and H positive ion loss. एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम और वाटर का रिटेंशन करेगा. तो सोडियम भी ज़्यादा होगा, वाटर भी ज़्यादा. देन देयर इज लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन. तो मोर लॉस मीन्स दैट विल कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. तो एल्कलोसिस तो होगी. सोडियम का रिटेंशन हो रहा है, तो दिस विल कॉज हाइपरटेंशन. इट कैन कॉज पाल्पिटेशन. राइट, लो रेनिन था तो लो रेनिन भी होगा. सो आंसर विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस. इट विल नॉट कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इट विल कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. लो रेनिन था तो क्या नहीं था? पाल्पिटेशन नहीं था या हाइपरटेंशन नहीं था? व्हाट वाज नॉट गिवन? हाइपरटेंशन नहीं था. ओके, दिस वाज लो रेनिन. तो स्टिल आंसर क्या होगा इसका? आंसर विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस. आई थिंक ये भी सही लोगों का सही हुआ है. क्लियर? ओके, आदर्श, यू आर आस्किंग समथिंग ब्रेन एंड स्पाइनल, व्हाट इट इज? Okay, this was question number 13. Okay, then this is the question which some of you are telling. During inspiration, systolic blood pressure decreased by more than 15. Normally it is more than 10. So अगर 15 से ज़्यादा fall हो गया है, so this is what question किस पर पूछा है? It is a question. So question on pulsus paradoxus. It is a question on pulsus paradoxus. So I think it was given. कहाँ नहीं मिलेगा, राइट? आदर्श, कृष्णा, आयु, इट वॉज गिवन कहाँ नहीं मिलेगा, वेयर यू विल नॉट सी पल्सस पैराडॉक्सिस, राइट? ऑप्शन में मतलब कहाँ मिलता है? यू कैन सी दिस वेयर, यू कैन सी दिस इन ब्रोंकियल अस्थमा, यू कैन सी दिस इन कार्डियक टेम्पोरेट, यू कैन इवन सी दिस इन रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. कौन सी कार्डियोमायोपैथी में नहीं होगा? HOCM में नहीं होता. सो दिस इज द आंसर. सो जस्ट लेट मी नो HOCM वाज इन द ऑप्शन और नॉट. HOCM था ऑप्शन में कि नहीं था? वाज इट गिवन इन द ऑप्शन? HOCM था. Then this is the answer. If HOCM is given, this is the answer, because in HOCM what you will see? In HOCM you will see reverse pulsus paradoxus. Here you will see reverse pulsus paradoxus. Simple? Okay, very good. 14 out of 14. I know most of you have marked more than 10 correct. Trust me. Medicine questions were simple. Moving to next one. Okay, this was the question like some students are saying there were two questions on fasting blood sugar and I don't think like it's the exact question, so you can tell me the question. क्या क्वेश्चन आया था फास्टिंग ब्लड शुगर से? कोई बताएगा क्या क्वेश्चन आया था फास्टिंग ब्लड शुगर से? Okay, so understand. Okay, so let me, if I try to frame a question, so if they ask you like what is fasting value, so fasting value, understand, कार्डिक टेम्पोरेट में क्या होगा? कार्डिक टेम्पोरेट में पल्सस पैराडॉक्सिस होगा. इन कार्डिक टेम्पोरेट यू विल सी पल्सस पैराडॉक्सिस. So there were two questions on fasting blood sugar. So suppose maybe they can give you like normal value less than 100, right? So less than 100. अगर 100 नहीं है, इसको उज्जवल गजेंद्र सेम क्वेश्चन था. What is the amount of glucose? Was it the same question? HbA1c था, वो आगे आएगा क्वेश्चन. So there was a question on target HbA1c. So remember target HbA1c in any patient. So that is always less than 7%. So this as per Harrison it is always less than 7%.
राइट। फास्टिंग ब्लड शुगर कहाँ से लेना है, ये क्वेश्चन था। व्हाट इज बेस्ट वे टू मेजर टू और पोस्ट पैनल ब्लड? राघव, दैट क्वेश्चन इज सेपरेट। बेस्ट वे इज HbA1c, जिसमें आफ्टर इंस्पिरेशन डू नॉट डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऑप्शंस वेयर आफ्टर इंस्पिरेशन डू नॉट डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऑप्शंस वेयर कार्डियक टैम्पोनेट, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। हाँ, ये सेम क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। इन कार्डियक टैम्पोनेट यू विल सी दिस विल डिक्रीज, in asthma this will definitely decrease, right? Postprandial blood sugar level of diabetes mellitus according to WHO, postprandial according to WHO is more than 200, right? Okay, so just let me write the values, all the values, so that you can get an idea what type of question it was given. So just I am writing here fasting sugar, postprandial blood sugar and HbA1c. So just try to understand this. Fasting blood sugar values less than 100, postprandial value less than 140, HbA1c less than 6.5. This is normal. Then I can say fasting more than 126, postprandial more than 200, HbA1c less than 5.6, more than 6.5. This is diagnosis of diabetes. अब इसके बीच की वैल्यू जो होगी दैट इज 100 to 125, 140 to 199, 5.6 to 6.4. This is called pre-diabetes or impaired glucose tolerance. Okay, and one was oral glucose test में what will be the range? So OGTT में पूछा oral glucose कितना देते हैं, that is 75. Okay, I'm not getting exact question. Can someone write? No sir, question was in order to measure 2R postprandial blood glucose, what is standard glucose given? Option where slice of bread 75 milligram, other were too high value. Okay, again we are not getting exact question what they are asking. Let us see your comments again. So goal of treating, that is another Reshma Manzoor, goal of treating chronic diabetes, that HbA1c value उस पर क्वेश्चन था that I have placed, उसका आंसर होगा less than 7%, right? Postprandial level, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर करता हूँ. Postprandial level of diabetes mellitus according to WHO, postprandial level WHO के हिसाब से कितना होगा? That is more than 200 to diagnose diabetes. 75 milligram 200 less than 6.5. and one was oral glucose test में what will be the range? Question was in order to measure 2R postprandial blood sugar glucose, what is standard glucose given? 75 ग्राम में ऑप्शन होना चाहिए फिर, right? Then option will be in the gram. Okay, so can anyone give me a complete question? Try इसका कोशिश करो कि पूरा complete question मिल जाए. What is the sugar level? तो ये sugar level WHO level के हिसाब से मैंने लिखे हुए. वो ग्राम में होगा फिर, mm में नहीं होगा फिर. that will be कितना देना ग्लूकोज, that will be in the gram, right? Capillary, usually it should be capillary. One was HbA1c value, उस अगर जो टारगेट पूछा आयु, if target is given then answer will be less than 7. Yeah, it should be in gram. Raghav, it should be in gram, not milligram. If it is given in gram, then it's 75 gram. यहाँ पर तो mm में दे दिए, mm तो नहीं होगा, ग्राम में होगा. ऑप्शंस पे लेस देन 6.6, लेस देन 6, लेस देन 7, लेस देन 7. आयु दैट वो भी अभी मैं उस पर आऊंगा, उस पर आएगा, राइट? ओके, वीनस कैपिलरी मोर देन 200. यस उज्जवल, दिस इज द आंसर. ग्राम में था देन ठीक है. कितना ग्लूकोज देना है for OGTT, that we give in gram. If a person has glucose 200, what would be HbA1c? HbA1c पूछा है सिर्फ आपसे, तो इसको 75 ग्राम 2 आवर में टेस्ट करेंगे. ओके,
Now understand, this was given कि patient is having 200 milligram glucose. तो आपको क्या करना है, HbA1c को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है. Suppose if I say like if it is given 70, 7, if it's HbA1c gives 7, if you multiply this by 30, this will be 210. So close to 7, right? Close to 7. Okay, चलो उस पर भी बात करेंगे अभी और. Moving to next one, you can see this was a question, stroke patient. Question number 15 was something related to this. Target, now see, if target they have asked, then answer will be less than 7. Target is always less than 7, right? Okay, next is question number 16. Okay, I think there was a clinical case. Try to understand this case. Question was, a patient is having stroke followed by irregular rhythm. So understand, question क्या पूछा है, patient को stroke है, stroke के बाद irregular rhythm हो गई. So you can see whenever they mention irregular rhythm means patient have developed AF. So patient have developed AF, it means there should be some embolus which is migrating to your brain, and that is called embolic stroke. So it's a case of embolic stroke. ये TIA नहीं होगा because TIA will not present with AF, right? एक क्वेश्चन था, पर्सन को अर्ली मॉर्निंग में सीवियर यूनिलैटरल हेडेक होता है, उसको फोटोफोबिया और हेडेक में स्किप करने पे. हाँ, वो मैंने अभी लिखा, इशाक रियाज दैट आई हैव मेंशन, दैट इज माइग्रेन, right? And phrenic zone, if they are asking question on target HbA1c, then answer is less than 7, not 6.5. Now you cannot completely treat the patient. ना आपको पूरी तरीके से ठीक तो नहीं कर सकते. So what is the target as per WHO range? It is 7. इशाक रियाज उसका आंसर होगा माइग्रेन. Clear? Okay, moving to next one. RTA plus bradycardia. RTA mention था, bradycardia. What was the type of shock? Cardioembolic mention था. Okay, very good. When cardioembolic is mentioned, this is the answer. It is a case of cardioembolic stroke because patient is developing AF. But symptom resolve, it was mentioned. Some students are saying, Raghav, like patient was having this for more than 48 hours. This was mentioned. Some students are telling me like it was for more than 48 hours, so it cannot be TIA. अब 24 था कि 48 hours था. Ischemic stroke दिया था. Now understand, embolic, thrombotic, lacunar, all these are type of ischemic stroke. Even if it is not given, then ischemic stroke is given. That is the answer. So embolic stroke, thrombotic stroke, all these are type of ischemic stroke. So cardioembolic था. Symptom resolve within 48 hours. Now see, Ujjwal, ध्यान से देखो क्वेश्चन को. Ujjwal, try to understand. Symptoms are not resolving in 24 hours. When they are not resolving in 24 hours, it cannot be. It cannot be TIA, right? When they are mentioning 48 hours, अगर mention है तो TIA तो नहीं होगा ना. They mention that patient skipping night meals in morning headache. That is another question, right? Resolve था. पूरा रिकवरी 48 आवर्स में आपने थ्रोम्बोलाइज कर दिया ना, इसलिए रिकवर हो गया. बट अगेन इट विल नॉट बी अ फुल रिकवरी, देयर इज पार्शियल रिकवरी. ओके, आई ट्राई टू गेट द कंप्लीट क्वेश्चन. बट आप याद रखो, अगर क्वेश्चन में ये इफ इट इज मेंशन लाइक दिस, सपोज इफ आई से इफ इट इज गिवन लेस देन 24 आवर्स, इट इज TIA. इफ इट इज लाइक मोर देन 48 आवर्स, इफ इट इज गिवन, देन इट कुड बी अ केस ऑफ स्ट्रोक. अब स्ट्रोक में ऑप्शन क्या था? इस्केमिक स्ट्रोक था, राइट? Or they are asking you it is like cardioembolic. So cardioembolic is also a type of ischemic stroke. Simple. Ischemic stroke के types होते हैं. Simple. Symptom resolve. Then I don't think they have given you 48 hours. They can't give the word 48 hours. Shock का question ये दूसरा था. Now understand. If it is bradycardia, then it's a case of neurogenic shock. If it is bradycardia, it's a case of neurogenic shock. Again, it's a simple, straightforward question. Clear? Acute ischemic stroke था, acute ischemic hematoma दोनों था. Then answer will be acute ischemic stroke. Embolic stroke, ischemic stroke, TIA and one more. Okay, Ayu is giving you these three options. Ayu ने ये तीन option बताए हैं. Embolic, ischemic, TIA. So it now see. Embolic, ischemic, TIA. So
48 hours is mentioned, it cannot be TIA, right? Ischemia, again, when embolic is given, because there is an embolus, that is embolus is due to AF, right? So more chance the answer is embolic stroke. So embolic correct answer होगा. Is it clear? So this is what there will be, answer will be embolic stroke, because patient का this embolus is actually causing AF, atrial fibrillation. Okay, then there was a question like which hormone is responsible for hyperpigmentation. So now look at the options. क्या option दिए थे? ACTH option में था, और you can see POMC, pro-opiomelanocortin और MSH, इन तीनों में से कुछ option में था. You can choose one answer. Any one was given in the option, ACTH, pro-opiomelanocortin और MSH. Migraine पे भी आएंगे, that is given. Tell me anything given from this? कुछ दिया हुआ था इसमें? Okay, so students are saying like MSH was given, so answer will be MSH. So these are the hormones which can cause hyperpigmentation. Okay, moving to next one, cystic fibrosis. Again, a case was given. It was a question on the clinical case, cystic fibrosis. MSH था, बस सही हो गया. देखो सही हो रहा है क्वेश्चन. पेपर इज इजी. अब पार्टी स्टार्ट. BP low, but bleeding absent on E-fast. Bleeding absent on E-fast means hemorrhagic stroke नहीं है, simple, तो अच्छी बात है. So they are mentioning like bleeding absent on E-fast. So again, it is a easy question. It is a case of neurogenic shock, right? Embolism का अलग question था. Then try to recall that question. कोशिश करो उसको recall करने की. Moving to next one, case of cystic fibrosis. Okay, ये मुझे खुद पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है, so I'm skipping this. Moving to next one. This was the question. A patient with infertility has ciliary disorder, situs inversus, chronic cytositis and bronchiectasis. So it was easy, straightforward. Okay, Ishaq Riaz, you are confusing. वो क्वेश्चन pulmonary embolism का था, वो मैं भी डिस्कस करूंगा. So it's a case of Carter-Gainer syndrome. Straightforward question was asked. That is a case of Carter-Gainer syndrome. I think most of you have marked this correct. Very good. Breathlessness दिया था, that was another question. MSH was there. Okay, good. Cough with change in position, that is pulmonary embolism. Ujjwal, that will discuss next. वो अभी आगे आएगा. Okay, this we have discussed. Cardiac tamponade में absent Y होगा, ये discuss कर लिया हमने. Moving to next. Okay, some are saying like ECG was given. So this type of ECG was given. कुछ लोग बोल रहे हैं VT का ECG था, and some are saying like ECG was given of SVT. So yeah, if you see like this ECG is given VT, in that case we will choose amiodarone. Ishaq, वो dyspnea Bardet, that is वो भी बताऊंगा मैं, वो pulmonary embolism था. If VT is given, then answer is amiodarone. If PSVT is given, then it will be a case of adenosine. Simple. हाँ, वो मैंने आगे लिखा है, like a bedridden patient suddenly became tachypneic, that is a case of pulmonary embolism. That I'll discuss next. PTEX याद था, PSVT था, then it's adenosine, definitely adenosine. This is question number 22. Okay, moving to next one. This was a question. ऐसा कुछ question था. Question number 23. 3 months history of diabetes mellitus, came to OPD. On examination, vitals are stable. HbA1c is done. What is the value? A value था या target था? PSVT था, then answer is adenosine. Now, what was asked in this question? They are asking you target. If it is target, then remember always less than 7%. Target पूछा था तो क्या होगा? 7% से कम. That is as per WHO. Clear? If they have asked the question on target HbA1c. Target is not 6.5, target is less than 7. But some are saying दो क्वेश्चन 2Q was there, एक में ECG था, एक में VT लिखा था, तो दोनों क्वेश्चन थे ये. So you want to say if both are given, then this is VT, this is PSVT. Same option थे.
टारगेट था, टारगेट पूछा था, देन आंसर इज 7%. इट इज नॉट होस्ट मेनी स्टूडेंट हैव मार्क्ड द आंसर लाइक 6.5 बट टारगेट इज नॉट 6.5. पेशेंट हैज मोर देन 200, टारगेट था तो 7 ही होगा आंसर. इफ द देखो वैल्यू आपसे नहीं पूछी बिकॉज देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज. लाइक फॉर्मूलाज मींस इफ यू मल्टीप्लाई, सपोज इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 30 then this will come 240. If you multiply this by 30, this will be 150. So target पूछा है generally, right? So target is less than 7%. It is not 6.5. और ऑप्शन में ये भी नहीं होना चाहिए. So answer will be less than 7. 7 था ऑप्शन में. गुड डॉक्टर MBBS वाला ऑप्शन में 7 था नहीं था. TSH अगर दिया हो उसमें तो भी आंसर MSH ही होगा. टारगेट था ना. If target was given, then answer is 7. Okay. एक में 70 P wave, 35 QRS wave in minute था, डायग्नोस पूछा था. क्वेश्चन ऐसे पूछा था 70 P wave and 35 QRS. SGL2 ब्लॉकर ग्लूकोसूरिया का क्वेश्चन था. QRS was normal. Normal QRS means that is PSVT. अगर normal QRS था तो that is PSVT. No value of 7. There was value written 7.5. Okay. अगर 7 नहीं दिया है, value 7.5 दिया है, then answer will be 7.5. Right? Okay. 7 भी था, 7 था तो answer is 7. Because मेरे हिसाब से 7 होना चाहिए. As per Harrison, as per WHO, you will see like target goal. Target goal is less than 7%. 7 था तो 7 आंसर, बात खत्म. Okay, moving to next. There was a question, a patient who is 70-year-old female, palpitation, and I think a COPD or asthma was mentioned to confuse you. So what is the drug of choice? So options were two options were confusing, oral or IV. So remember, it's a case where patient is having hypertensive urgency, and maybe there will be like hypertensive urgency. In this case, what we give? In this case, we give IB labetalol. Okay, 80-year-old male था, so it was 80-year-old male. Done. कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आंसर will be same. If it is 80-year-old male, then answer is same. वन क्वेश्चन ऑन एमेड्रोन. एमेड्रोन पे एक साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन था, मैं उस पर अभी बताऊंगा आपको. ओके, देन दिस वाज द क्वेश्चन जो आप बात कर रहे थे. अ पेशेंट हु इज बेड रिडन, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड टैकीपनिया और सॉरी टैकीकार्डिया. What is the diagnosis? Now understand, bedridden means it is like a prolonged immobilization. So post surgery, that's a case of pulmonary embolism. Simple, straightforward diagnosis was asked. Easy one. आपसे diagnose पूछा था. Rate of atria 70 था, ventricles 35 था. Diagnose पूछा था. You can see atria and ventricles, they are moving at a separate rate. So that's a case of third degree AV block. Yeah, pregnancy पूछा था, hypertensive crisis, even asthma is mentioned. So remember, labetalol की कोई as such contraindicated नहीं है. You can give this. Is it clear? Asthma था कोई बात नहीं. Answer will be still IV labetalol. Non-fluent aphasia से question था. There was an MCQ on non-fluent aphasia. So this was I think 24. This is 25. Then this is non-fluent aphasia. So this is Broca's aphasia. Right? This was the question came in exam. Pregnant female, hypertension, asthma, BP was 160/90. 160/90 था. अगर 160/90 था, then answer you have to change. If it is 160/90, then answer will become oral drug. And if it is pregnant, then it will become oral drug. Oral labetalol you can use. फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक था. फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में नहीं होगा ऐसा, थर्ड डिग्री होना चाहिए या कंप्लीट थर्ड ब्लॉक. Vicky Patil tried to give the exact question like 75 P wave, 35 QRS. और क्या पूछा था? What are more details? In question 22, BP more than 200. Target was asked. Target in question 22. In this question you are saying BP was more than 200. अगर BP 200, so what is the target is less than 130. It is 100% confirmed. ओके, निफेडिपिन था ऑप्शन में, तो निफेडिपिन वी कैन आल्सो यूज निफेडिपिन.
राइट। निफेडिन दे सकते हैं, यस। डायबिटीज में हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी निफेडिपिन गिवन, ओके दैट वाज द क्वेश्चन। ओके मूविंग टू नेक्स्ट वन। एक ये क्वेश्चन था, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इसोफेजियल कैंसर। To understand in this, we will perform upper GI endoscopy plus biopsy. Because it is cancer now, so you have to do biopsy. So upper GI endoscopy plus biopsy. This should be the answer. Clear? Okay, next one. A patient with CHF on hydrochlorothiazide. Patient is taking already hydrochlorothiazide and hypokalemia. What drug should be added? पोटेशियम लेवल लो है ऑलरेडी, आदर्श लेवल लो नहीं करना, ऑलरेडी लो दिया हुआ है. व्हाट ड्रग यू विल ऐड? So we can use amiloride, we can use spironolactone. We need to add potassium sparing diuretics. So amiloride will be the answer, right? Okay, 29, 2-month pregnant, anticoagulant of choice. So there should be some heparin. 75-year-old patient has weight loss. उसमें क्या करेंगे? और भी क्वेश्चन में कुछ पूछा होगा. There should be something else, right? So this is again anticoagulant. What you prefer in pregnancy? We will prefer heparin. So students are saying heparin was not given. So which heparin we use? Enoxaparin option में था शायद. So enoxaparin will be the answer, right? No biopsy was mentioned. Biopsy mention नहीं था. Any other thing was option? There was the answer. QR prolonged, RR prolonged. आयु वो क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो उसका था. बेडाकुलिन से एक क्वेश्चन था फार्माकोलॉजी का, वो अभी डॉक्टर सिराज बताएंगे. साइड इफेक्ट वाज आस्क्ड क्यूटी प्रोलोंगेशन. एमेडोरन पर मैं आऊंगा. आई विल कम टू एमेडोरन. Then this was the question again. There was more than 4 questions on diabetes. Endoxaparin, enoxaparin. Vital stable with long history of diabetes. What test you will perform? So again, the best test to confirm diabetes is HbA1c. So what will perform? HbA1c. So answer will be HbA1c without any doubt. Vicky Patel, any other option you remember? If it is not like any other option, biopsy अगर नहीं mention है, then that will be the answer even without biopsy. But that is actually not investigation of choice. फिर आपसे क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं पूछा होगा. थायराइड का मैकेनिज्म अभी सिराज सर बताएंगे. अभी CT was mentioned. CT था, और क्या ऑप्शन में थे? CT was mentioned. What else? CT was mentioned. बायोप्सी का कुछ भी था? अगर बायोप्सी नहीं था, try to recall other options. If it is anything related to biopsy, that's the answer. Otherwise, upper GI endoscopy is the answer. फिर यही आंसर होगा. Maybe then they cannot ask you investigation of choice. Patient is non-adherent to his drugs. Barium was in the option. Okay, very good. Again, barium is not investigation of choice. Yes sir, manometry was there. Okay, manometry हो गया. So looking all these options, so again answer will be upper GI endoscopy. CT भी दिया था तो भी आंसर क्या होगा? Manometry were given. Then still answer will be upper GI endoscopy. Clear? Manometry we do for a motility problem, like we do for achalasia cardia, for nutcracker esophagus, right? For jackhammer esophagus. In that case we do manometry. Okay. मूविंग टू नेक्स्ट वन. एक एबीजी पे क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं क्या क्वेश्चन था, बट सम क्वेश्चन ऑन एबीजी. ABCD 2 स्कोर पूछा था और नहीं पूछा था. बेरियम सॉल्व इज नेवर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. इट इज ऑलवेज लाइक इनिशियल टेस्ट. हमेशा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, राइट? बेस्ट इन्वेस्टिगेशन वाज आस्क्ड. ओके, सो बेस्ट पूछा है ना. ABCD 2 स्कोर, दिस इज, ये पूछा था. MRI भी था ऑप्शन में. MRI था ऑप्शन में, नहीं था. ओके, ट्राई टू रिकलेक्ट दैट. अक्लेशिया कार्डिया का बेस्ट इज मैनोमेट्री. फॉर अक्लेशिया कार्डिया बेस्ट विल बी मैनोमेट्री. क्लियर? इट विल बी मैनोमेट्री, विच इज डिराइव्ड पैरामीटर. ओके, बॉयड स्कोर. ABCD 2 स्कोर नहीं पूछा था. ओके, लेट अस रिमूव दिस. ये नहीं था.
Drug of choice for acute rheumatic fever. Okay, let's just try to collect this. If it is given in the option benzathine penicillin, ये था ऑप्शन में नहीं था. So drug of choice, so they can ask you either this thing, या तो ये पूछा होगा, or maybe like they are asking you question on like acute manifestation which is migratory polyarthritis. तो polyarthritis में हम क्या देते हैं? We prefer to give aspirin, and we give aspirin in very high dose, right? That is 75 to 100 mg per kg per day. That is very high dose aspirin we give. What else? Agar maybe like if they are asking you about chorea, then they can mention valproate. ऐसा कुछ ऑप्शन में था, valproate या haloperidol. Or if they are asking you refractory chorea, then answer will be IVIG. Okay, so aspirin था, so answer is aspirin. So maybe the question will be like ऐसा कुछ था, शंकर नहीं था, ऐसा कैसे नहीं था? हमने भी पता किया है, हम भी सेंटर पर गए थे. देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन रोमैटिक फीवर, डेफिनेट क्वेश्चन था ना भाई, बड़ी हिस्ट्री थी, लेकिन आपको तो छोटी याद करनी है. तो मोस्ट स्टूडेंट्स आर सेइंग सर बेंजाथिन पेनिसिलिन ऑप्शन में नहीं था. It means what they want to ask. It means they want to ask like acute mention. It means patient is having migratory polyarthritis. तो patient को जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में inflammation है. In that case, what we give? We give aspirin. Clear? Haloperidol. If they mention chorea, so chorea, अगर in chorea we can use haloperidol. Chorea word is mentioned, then only you will use any of these three conditions. So IVIG we prefer only in rheumatic, means refractory chorea in end stage. History of arthritis पूछा, then answer is simple. It is aspirin. Aspirin is the answer without any doubt. Yes, question था, देखो था ये question. Clear? Moving to next one. Aspirin था, aspirin answer. Migraine. So this was the question. A patient migraine का question था. So again it was headache was mentioned, unilateral with skipping meal. Skipping meal, skipped meal, it's a trigger. तो अगर आप ब्रेकफास्ट या लंच डिनर नहीं करते when you skip the meal, that can act as a trigger for migraine. So diagnosis is migraine. Photophobia was also mentioned, I think. So they have also mentioned photophobia. So it's a case of migraine, right? Clear? Chorea was not given. Okay, STEMI question, treatment of choice. Option was streptokinase. STEMI का question है, then answer should be PCI. PCI था option में. Okay, then there was a question FEV1 less than 70% of predicted. So it's a case of COPD, means some obstruct or asthma. So दोनों में से देखो क्या दिया था, that will be the answer. It's a case of obstructive lung disease. Migraine था, photophobia भी था, तो वो सही हुआ है तुम्हारा. टेंशन ना लो, जस्ट रिलैक्स. क्लियर? अर्ली मॉर्निंग हेडेक था, हो सकता है माइग्रेन कैन अकर एनी टाइम, राइट? इट कैन अकर एनी टाइम, सिंपल. ओके, देन देयर वाज अ क्वेश्चन, अ पेशेंट इज हैविंग करंट रेड जेली स्पुटम, अल्टर्ड सेंसोरियम, हाइपोटेंशन, क्लिनिकल केस. नाउ अंडरस्टैंड, करंट रेड जेली स्पुटम कहां मिलता है? वेयर वी सी दिस इन क्लेप्सियला. क्लेप्सियला में होगा. Now question, I think they are asked you like this type of question. It was oral antibiotic, IV antibiotic. ऐसा कुछ क्वेश्चन था. कुरान जेली स्पुटम. अब देखो क्लेप्सियला. Now when we see कर्ब 65 score, कर्ब 65 score means confusion, urea increased, means BUN is increased, respiratory rate is increased, BP is low, 65 or more age. For each we will give one. confusion पे एक, BUN बढ़ा हुआ उस पर एक, respiratory अगर टैकिप नहीं है तो एक, बीपी कम है तो एक, 65 से एज ऊपर है तो एक पॉइंट, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. व्हेन यू कैन सी कुरांट रेड जेली स्पुटम मींस क्लेप्सियला, अल्टर्ड सेंसोरियम मींस कंफ्यूजन है, हाइपोटेंशन इज मेंशन्ड मींस बीपी लो है, मींस 2 पॉइंट ऑलरेडी है. So this was the question came in exam. So it's a case of Klebsiella pneumonia. So this patient, when score value is more than 2, what you will do with this person? What you will do with this patient? You will admit the patient in ICU. So this is the patient you will admit in ICU and you will start IV antibiotic. ये option था. Options were like what you will do. You will give oral antibiotic or IV antibiotic, right? IV antibiotic, yes, in ICU. IU it was not COPD, then answer is asthma. Simple.
ये वाला सही किया है ना, इट्स बेस्ड ऑन कर्व 65 स्कोर। हाइपोटेंशन नहीं था, अल्ट्रासेंसोरियम था, इफ क्रेटिनिन था, देन अगेन व्हेन यू सी 2 और मोर स्कोर, राइट, यस, आईवी एंटीबायोटिक देंगे, आईसीयू में एडमिट करेंगे, दिस वाज द आंसर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। एक वालप्रोइड से क्वेश्चन था, आई थिंक इट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लिनिकल केस, लाइक अ पेशेंट हु इज हैविंग सीजर्स, so drug of choice for seizure was asked, tonic clonic seizures, tonic clonic seizure. So in that case what drug you will use? You will use valproate. Seizure in one arm was history option was subthalamic nucleus. Seizure दिया था या tremor दिया था? Hemibellismus होगा, Vicky Patil, if there is involvement of subthalamic nucleus that will cause hemibellismus. In this case, NB asked about respiratory rate. So here it is more than 30. If it is more than 30, we give 1 point. दो के कॉम्बिनेशन थे, ओके, कौन कौन से दो ड्रग के? Akil Khan, for MI we do angioplasty. Angioplasty is a type of PCI. Yes, it was child with GTCS. GTCS था, right? Medicine questions are simple. It is paper simple tha. Okay, then this was a question. Imidazole can cause all except. So understand this, imidazole can cause both hyper and hypothyroidism because it is having a moiety which can cause even hyperthyroidism. So just let me write one more question. There was a question on hemibellismus, subthalamic nuclear involvement. So it's a case of, so can it cause pulmonary fibrosis? Yes, it can cause both hypo and hyperthyroidism. Gynecomastia नहीं कराता, तो आंसर क्या होगा इसका? गायनेकोमेस्टिया। गाबापेंटिन नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, अगर था तो वो आंसर नहीं होगा। लेवोटिर्सेटम एंड डायजेपाम ऑप्शन में थे। They asked about respiratory 40. Respiratory 40 is given again. If it is given 40 means that is more than 30 is 1 point. So 200 ऊपर पॉइंट आ रहे हैं, 2 स्कोर से ऊपर आ रहा है। Okay, then hemibellismus, this is involvement of subthalamic nuclei. Subthalamic nuclei. Gynecomastia होगा उसका आंसर। Lorazepam plus valproate. Yes, I think this ये आंसर हो सकता है. This could be the answer. Because first you need to stabilize the patient, then it could be lorazepam plus valproate. Gabapentin, like understand this, when we give this like as an antiepileptic drug, so like its toxicity is sometimes like there is a very long T-half, so you can see patient can be sedated for a longer period. That's why we generally don't use gabapentin and pregabalin as an antiepileptic drug. We use them more for neuropathic pain. Phenobarbiturate was not in the option. अब उसको नहीं यूज करते हैं, तो आंसर इज ये अच्छा आंसर है, valproate plus lorazepam. विक्की पाटिल, उसका आंसर एंजियोप्लास्टी ही होगा, राइट? मेनिया में फर्स्ट ट्रीटमेंट विल बी लिथियम. लिथियम ऑप्शन में था कि नहीं था? ओके, लेवी बॉडी पर क्वेश्चन था, समर सिंह हिरानो पर क्वेश्चन था, समथिंग वाज मेंशन. सो लेवी बॉडी वी सी इन पार्किंसन डिजीज and DLB, dementia with Lewy body. Irano body you will see in Alzheimer's. So there was one question. Status epilepticus, maybe this could be a question. अगर ये option में valproate plus lorazepam था, that is up, because just GTCS can convert into status. Gabapentin option में था, तो वो question मुझे बताना. What was the question? We'll discuss that also. Okay, there was a question on Light's criteria. So Light's criteria पे question था, तो understand this. What we do in Light's criteria? Pleural fluid protein is to ascitic fluid protein is to serum protein, sorry. Then pleural fluid LDH, serum LDH, when its value is more than 0.5, more than 0.6, right? पार्किंसन का क्वेश्चन था. ओके, क्वेश्चन में रिजिडिटी मेंशन थी, देन अगेन इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑन पार्किंसन डिसीज. ट्रेमर्स और ब्रैडिकाइनेसिया भी था, मींस ट्रेमर्स वाज गिवन, ब्रैडिकाइनेसिया वाज गिवन. डन. ओके, लाइट क्राइटेरिया पे जो क्वेश्चन था, लाइक सम टाइम अंडरस्टैंड व्हेन यू सी लाइक प्लूरल फ्लूइड, रेशियो ऑफ प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन is to serum protein more than 0.5, pleural fluid LDH, serum LDH more than 0.6, and this if you see pleural fluid LDH value is more than 2/3 of upper limit of serum LDH, that is what we call
सो क्वेश्चन पूछा था कि हाउ वी डिफरेंशिएट. So there are sometime we can differentiate, we cannot differentiate whether it is exudative or transudative because some exudate can present with transudative fusion. Answer था protein rich fluid. So the best method is it is protein. So अगर आपको दोनों में से एक चूज करना है, so what we do like pleural fluid protein minus serum protein minus pleural fluid protein. So protein is best. Which of the following will rule out transudative? So answer is protein. Yes, differentiate. देखो क्या होता है, around 10 to 20% we can this fusion we can misdiagnose by the Slides criteria. So what we do, then we need to see the subtraction of protein. So that's very very important. So what will rule out transudative? So understand, we need protein. Clear? Yes, Lewy body, it was image based question. Myasthenia drug of choice was asked. Simple question था, drug of choice पूछा था. Then there was a question of patient who is suffering from bronchoria, watery sputum. So if it is given bronchiectasis in the option, that is the answer. Some are saying it is not given, then answer will be CA lung. CA lung can also present with bronchoria. Okay, so don't worry, I think we have discussed most of the question, around 40-42 question. So after 2-3 days we will discuss a detailed version of with proper options. Abhi bas shanti se enjoy karo. I think now you can see, you can cross check yourself. Just I'll move the slide once again. एक बार मैं शुरू से दिखा दूंगा. No cellular content will rule out. Yes, which cells we cannot rule out. So we have to check protein. आपको protein का differentiation check करना है. तो एक बार मैं दिखा देता हूँ like what are the mistakes which you did and what you need to rectify. So let us see this. तो कहाँ गलती करी है, let us see this. Okay, starting with this, ये तो सबका सही हुआ है, right? Bronchiectasis was there, so that is the answer. So ये सबका सही हुआ है, easy one. Then you can see iron deficiency anemia. I think most of you have answered correct. Asterixis वाला कुछ लोगों ने गलत किया है, तो this is like relatively a difficult one. Then you can see this Mann syndrome, again most of you have did this correct. Cannonball सबका सही हुआ है. Surfactant deficiency सबका correct. Refeeding syndrome सबका सही हुआ है. Ritter syndrome is easy one. Dux criteria easy हुआ है. Cryptococcus, then you can see this ectopic ACTH, ये भी almost सबने सही किया. Heel to shin test, cerebral examination. कफ का हिस्ट्री था आंसर में, bronchiectasis था, that's the answer. वही आंसर होगा. कौन syndrome पूछा था. Then they ask you like all are causes. Simple question को clinical way में बना दिया, but question was all are causes of pulsus paradoxus except. Cough with changing position था, chronic smoker था. MG वाले क्या था, MG वाला means MG क्या है, हाइपोथर्मिया में क्या करेंगे पूछा था. ऑप्शन क्या क्या थे, एस्पिरिन था, एस्पिरिन आंसर होगा. कार्टागेना सिंड्रोम का क्वेश्चन था. ओके गाइस, सो आई होप लाइक यू हैव एंजॉयड दिस. सो थोड़ा अपना देख लो, इसको रेक्टिफाई कर लो. देन आफ्टर फ्यू डेज वी विल डिस्कस द डिटेल वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय.